Yes, good morning, everyone. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. How are you, Pritam? All good? Yes, sir. All good. Yes. Rohini, how are you? Yuvraj, Tushita, all good? Yes, Tushita, ask Yes, your sir. Good morning, sir. yes. Tushita, ask your friends to join, please. We are recording the session, but still they should join. Okay, so we start now. Let's start soon because let them join. We would like to recap. हम लोग recap करेंगे last session का जो हम लोग ने वीजा के ऊपर सेशन किया था. I would like you to any one of you can really recap it कि क्या हमने किया था सेशन में. प्रीतम, tell us what we did in visa class last class on Tuesday. Pritam. So first we looked about the what is visa, then different types of visa, that is e-visa, paper visa. Uh, then we looked about the countries where we don't require passport to travel for Indians, that is Nepal and Bhutan. We looked at the countries where we can travel very easily. That is, we can have e-visa or visa on arrival as well. Uh, then we looked at some of the examples of e-visas, uh, e how to fill the e-visa forms, and we got some links as well. The countries were like Sri Lanka, Oman, Azerbaijan, Vietnam. These were the things. Okay, great. Have you anyone has a practice this links? मैंने जो links भेजी थी आपने open करके देखी है? Yes, रोहिणी, sir. रुचिता, प्रीतम, युवराज, लिंक देखा आप लोग ने? FAQs वगैरह पढ़ा? Yes, sir. ओके ग्रेट. सो लिंक्स जो मैंने 5 कंट्रीज की शायद भेजी थी, श्रीलंका, वियतनाम, अजरबैजान, कीनिया एंड ओमान. ओके, व्हाट आई वांट यू टू डू फॉर योर्स, दिस इज फॉर योर गुड. हाँ, मैं तुमको बता रहा हूँ ये पांचों वीजा जो हो रहे हैं ना, होते हैं ऑन ऑन अराइव, सॉरी जो ई वीजास हो रहे हैं, हम लोग इन पांचों वीजास की आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से. कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको लगता है कि कुछ डाउट है इसमें, यू कैन आस्क मी in any of the class or separately you can ask me on email. So इससे क्या होगा कि आपका 5 कंट्रीज वीजा के लिए और 2 कंट्रीज जो अपनी के नेपाल एंड भूटान है, दैट वुड बी रेडी फॉर इंटरव्यू, ready for discussion with your potential corporate जहां पे आप जॉब के लिए जा रहे हो. आपकी सीवी में आपको डालने के लिए हो जाएगा कि आई हैव अंडरस्टूड वेल. एक्सपर्टीज डालते हैं ना हम लोग वीजाज और ई वीजाज, एक्सपर्टीज. या फिर हम लोग डालते हैं कि हम अपने सीवी में हम लोग ये डालते हैं कि व्हाट वी आर कॉन्फिडेंट इन, व्हाट वी कैन डू. सो यू कैन राइट इट अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑन द visas in the following on the visas in the following countries. Let's say you can put it Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Vietnam, Kenya, Azerbaijan, Oman. So इससे क्या होगा कि you will be confident enough to share your knowledge on your CV. उसके बाद में when they ask you in the interview that okay, tell me, you are writing in the CV, tell me how the Oman visa works out. So you can tell the easy steps. Oman visa, this is the Oman Police, Royal Police website is there. You go to it, you put the following details, name, this, and then you get the visa. So this is the way you explain. Your knowledge will be display when you are going for interview. So I'm again and again repeating it. You all should prepare for your interview, final interview or final job placement. This is the way you can do it. आपकी नॉलेज जो आप गेन कर रहे हो, आप उसको अपने सीवी में डाल रहे हो कॉन्फिडेंटली, एंड यू आर टेलिंग टू कॉर्पोरेट दैट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू अप्लाई दीज 5 और 2+2 7 वीजास. इसके बाद में आई एम वर्किंग ऑन इट बिकॉज आई टोल्ड यू कितनी कंट्रीज हम लोग वीजास ऑन अराइवल कर सकते हैं, 60 कंट्रीज. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन enhance your knowledge and be confident for a future job.
और इंटरव्यू, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांट यू डू। अगर किसी ने एफएक्यूज नहीं पढ़े हैं, इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस भी करके देखो। लॉगिन आईडी बनाने की जरूरत नहीं होगी, अगर देखना भी है कुछ तो प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो। और यू कैन मेक अ डमी लॉगिन आईडी, डजंट मेक डिफरेंस, कुछ नहीं प्रॉब्लम होता। डमी एक अपने ईमेल से बना लो एंड गो टू इट, चेक हाउ इट इज, टेक अ स्क्रीनशॉट, उसकी स्क्रीनशॉट रख लो अपने पास में कि हाउ इट लुक्स। इफ यू एम क्रिएटिंग आईडी, दिस इज द आईडी स्क्रीनशॉट। सेकंड इज यू कैन यू ऑन एप्लीकेशन पेज का स्क्रीनशॉट लो, एप्लीकेशन फिल करो, सबमिट करो, यू गो ऑन अ पेमेंट पेज का स्क्रीनशॉट, पेमेंट मत करो, वंस द पेमेंट पेज आ जाएगा उसके बाद में कंफर्मेशन आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, योर प्रैक्टिस योर वीजा स्किल्स, और ये स्किल्स को आपको सीवी में रखनी है। सो रिमेंबर दिस, इफ यू हैव नॉट डन anything like on the links, please do it. Okay, now I'm sharing it the screen for the today's session. Tushita, people are joining or no? Can you please push in your network, because I don't see your campus people have joined. Tushita. Yes, sir. I have sent them the link, but they Okay, are not good. seeing. Okay, is there any classes today? No, right? Oh, Okay, so they are free, so they can join, but they are not. It's okay. So now I'm sharing the screen where we are talking about today about insurance first. Okay, is it visible, the screen? Yes, sir. Okay, great. Okay, who Yes, will sir. tell me, yes, who will tell me what is travel insurance? कौन बताएगा मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है? सर ट्रैवल इंश्योरेंस एक ऐसा सर इंश्योरेंस होता है जो हमें सर ट्रैवल के दौरान कराना चाहिए। और ट्रैवल के दौरान हमारे पास जितने भी मतलब वो होती हैं, पूरी ट्रैवल की जर्नी की सारी कवर उसमें होती है सर। हेलो 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 सर, एम आई ऑडिबल? Yes, Yuvraj, you're audible. Thank you. Anyone else wants to add here? सर इसमें ये है कि जैसे कि ट्रैवल के दौरान हमारी कोई इंजरी हुई या मेडिकल इमरजेंसी हुई, और हमारे सर एड ऑन सर्विस भी इसमें कुछ होती हैं। जैसे कि हम अगर बाहर फॉरेन की कंट्री में हैं या कुछ ऐसी जगह पे हैं जहाँ से हमको सर घर आने में मतलब असमर्थ हैं, और वहाँ घर में कुछ चोरी हो जाती है गुड्स वगैरह की, या कुछ घर के साथ भी दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें सर घर का भी इंश्योरेंस कवर होता है, एड ऑन सर्विस। Okay, great. So you are telling right, but anyone else wants to add? किसी को और ऐड करना है? ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है और क्यों हम यूज करते हैं? सौम्यदेव, कैन यू टेल अस ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में एंड व्हाट इज व्हाई वी यूज इट? ट्रैवल इंश्योरेंस यूज करने का मेन मोटिव ये है कि ट्रैवल के दौरान हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं या इमरजेंसी है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गया, कोई गुड्स की चोरी हो गई, लगेज की चोरी हो गई, ये सब सर कवर होती है उसमें। तो सर टेंशन कम रहता है थोड़ा सा। और सर थैंक यू। यस और युवराज, सर थैंक यू। हमारे सामान की भी रक्षा होती है। यस युवराज, थैंक यू। सौम्यदेव, आप बताइए। Sir, it is basically used for the coverage of any of any financial loss, or sir, any medical necessity during our travel. Okay, is it a mandatory document, Somadev? Sir, for some international trip, it is mandatory.
ओके, सो युवराज ने बताया, जैसे सौम्यदेव ने बताया, बिट्स एंड पीसेस, यस, the information is correct. So travel insurance policy is a document. Travel insurance क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट बोलते हैं हम लोग। ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, कोई बताएगा? ट्रैवल, रोहिणी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं इंटरनेशनल ट्रिप के लिए? ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, रोहिणी? सर ट्रैवल, सर मैं बताऊं? युवराज 1 मिनट रुको, दूसरे लोगों को भी आंसर देने दो। रोहिणी, तुषिता, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं इंटरनेशनल ट्रिप में जाने के लिए? The passport, visa, travel insurance, and एंड health documents. नो हेल्थ डॉक्यूमेंट, हेल्थ डॉक्यूमेंट इज नॉट अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इट्स ट्रैवल इंश्योरेंस जो होता है वही हेल्थ, उसी में सब कवर होता है। व्हाट एल्स? टिकट, ओके, योर होटल अकोमोडेशन कंफर्मेशन, योर आइटनरी, दीज आर द ट्रैवल डॉक्यूमेंट। जब आप ट्रैवल करती हैं, सो आपकी फाइल होती है, आप फाइल लेके जाती है ना, उस फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं? व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट यू सबसे पहले पासपोर्ट, बिकॉज विदाउट पासपोर्ट यू कैन नॉट ट्रैवल। इन द पासपोर्ट यू शुड हैव वीजा, आइदर द प्रिंटेड वीजा और ई वीजा। हम लोग ने जो ई वीजा की बात की थी अभी, एक फिजिकल पीडीएफ फॉर्मेट में या प्रिंटेड रखते हो आप। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस, ऐसे सौम्यदेव ने जैसे बताया कि फ्यू कंट्रीज दे आस्क मैंडेटरी टू हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस, and some of the countries they don't look for travel insurance. So travel insurance, then ticket, how you will travel, ticket is a travel document, hotel confirmation is a travel document, okay? So these are the travel document. सर वीजा, वीजा, पासपोर्ट, Yes, yes, we covered everything, Yuvraj, you listen to us. युवराज, मैंने बोल दिया ये सब चीजें, रिपीट मत करो। ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी इज द कवर दैट प्रोटेक्ट द पॉलिसी होल्डर फाइनेंशियली फ्रॉम एनी अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल वूज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ट्रिप टू इट्स कंप्लीशन। कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीजें अगर होती हैं ट्रैवलर्स के साथ में, सो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी उसको कवर करती है फाइनेंशियली। I will tell you where all we can cover. Policy is suited to your need, may include emergency medical assistance. हमने जैसे मेडिकल की बात की, किसी की तबीयत खराब हो गई, somebody is ill when they are traveling, they can go to the hospital, they can cover their medical expenses can be covered. Baggage theft, अगर किसी का बैगेज चोरी हो गया एयरपोर्ट से, होटल से, कहीं से भी, that is cover. Or loss, protection from unexpected events such as storm, flood, as well as cover accidental death amongst other. There are many other reasons. हम लोग पासपोर्ट चोरी हो गया, that's a travel insurance covers that. बैगेज चोरी हो गया, then स्टॉर्म आ गया, थंडर स्टॉर्म, या फिर भूकंप आ गया, मींस अर्थक्वेक आ गया, कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई, दे आर थिंग्स, some things covered, some not covered, as well as accidental death and some other things which I'm telling you in next slides. तो ये सब चीजें ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर हो जाती है। इट इज अ मस्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट फॉर सम ऑफ द कंट्री, एज सौम्यदेव ने बताया कि हाँ, ये मैंडेटरी नहीं है, किस किस कंट्री के लिए मैंडेटरी है, ठीक है? एनी क्वेश्चन ऑन डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस? ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो हम लोग लेते हैं, वी कवर। कोई भी इंश्योरेंस होता है ना, हम खरीदते हैं इंश्योरेंस, वी बाय इंश्योरेंस एंड वी पे फॉर दैट। सो सिमिलरली ट्रैवल इंश्योरेंस इज दैट, एंड वी बाय एंड वी पे फॉर दैट। ट्रैवल इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर हॉलीडे ट्रैवलर्स, अगर आप हॉलीडे के लिए जा रहे हैं तो भी रिक्वायर्ड है, बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, मेडिकल टूरिस्ट और स्टूडेंट ट्रैवल। इफ यू आर गोइंग टू स्टडी अब्रॉड for 2 years, still you need travel insurance, because the countries want insurance to be covered if you fall sick. कभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो you go to the clinics, travel clinics or a tourist clinic or any other general clinics where there is a travel insurance company, they have a tie up, so you can go and get the treatment. So travel insurance student travel के लिए भी काम आता है, medical tourist जो medically unfit है, they are traveling for medical checkup, they also look for travel insurance because उनको travel insurance cover होता है, international medical treatment.
Business travelers, as we say, purpose of travel is holiday or business, you must have a travel insurance. Which country asks for mandatory travel insurance policy before travel? These are the few countries, huh? There are many more. You can note down the assignment. You can note down the assignment. I want 10 countries listed. You should list 10 countries name, those who require mandatory travel insurance. यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू शुड हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस. साउथ अफ्रीका, Australia, and Schengen visa. Schengen visa is like all Schengen countries in European region. They are looking for travel insurance always when you apply for visa. So ये लोग अप्लाई करते हो ना तभी आपको लगते हैं. कभी कभी वो ट्रैवल करते हो तब लगते हैं कि वीजा मिल जाता है. जैसे यूएस का वीजा इज फॉर 10 years they give or 5 years they give. So when you are applying, you are giving you are actually applying and giving the documents as a travel insurance document. And when you are traveling, suppose you travel this year, you travel 2023, अब आपका वीजा वैलिड है 10 years के लिए, so you will travel in 2025, so you again take out the travel insurance. अगर आप 1 महीने के लिए जा रहे हो, 6 महीने के लिए जा रहे हो, तो you take out the travel insurance. You can buy travel insurance and travel because they ask you at the time of immigration or when you enter in the country. So that's a travel insurance mandatory countries. Assignment number 1, you have to list down 10 countries apart from these, those who require Indian to must have travel insurance. What is not covered in travel insurance? किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक इसमें, अभी तक जो किया? Anyone has any doubt, any doubt on this? No, sir. Okay, great. Now, what is not covered in travel insurance policy? Financial protection when traveling for medical reason. So medical reason, जब मेडिकल रीजन के लिए कुछ ट्रैवल कंपनीज, अगर ट्रैवल इंश्योरेंस एक होता है जो होता है आपका ट्रैवल के लिए होता है. ट्रैवल, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, फर्स्ट पर्पस इज ट्रैवलिंग, नॉट द फर्स्ट पर्पस इज मेडिकल. तो यहाँ का फर्स्ट पॉइंट है वो है अगर आप मेडिकल रीजन के लिए जा रहे हैं, so that's not covered in travel insurance. That is a separate policy, international mediclaim policy. Generally people take it. So when you are traveling abroad for medical treatment, you can claim that. वो international policies होती हैं. अपने इंडिया में आपने सुना होगा your parents and your friends and relative must have a medical policies. जो जाते हैं हॉस्पिटल में, so that cover 80%, 90%, 100% cover मिल जाता है. So that's the Indian mediclaim policies. International mediclaim policies जहां पे आप internationally travel करते हैं, so you can cover, and that's also some restrictions होते हैं उसमें कि this much value you can cover. So travel insurance में financial protection नहीं होता है for medical reason. अगर आप medical purpose के लिए जा रहे हो तो वहां अगर आपका कुछ हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं है. आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है, if you are traveling and going there and you fall sick, then it's covered. But you are purposely going for a treatment to abroad, that's not covered. डिफरेंस है इसमें, समझ जाना. अगर नहीं समझ तो पूछ लेना. कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसीज, अगर कुछ लोग प्रेग्नेंट वुमेन ट्रैवल करती हैं, so if they are traveling and cover travel insurance लिया है, if there is a complication, that's not covered. It depends on also the policy to policy, what kind of policy you are taking. Suicide case, एडवेंचर स्पोर्ट्स नेवर कवर्ड. एडवेंचर स्पोर्ट्स क्योंकि वहां पे साइन करना होता है इफ यू आर डूइंग बंजी जंपिंग कि समथिंग गोज रॉन्ग, इट्स माय फॉल्ट और माय रिस्पांसिबिलिटी. अंडर इन्फ्लुएंस, लॉसेस कॉज्ड व्हाइल ट्रैवलिंग अंडर इन्फ्लुएंस. लेट्स से एग्जांपल, आपने कोई टूरिस्ट होता है वो ट्रैवल कर रहा है एंड ही वेंट टू अ क्लब, बहुत सारा ड्रिंक कर लिया उसने एंड ही इज लाइक और ड्रग्स ले लिया and then he has a loss, means passport चोरी हो गया उसका या फिर उसका सामान चोरी हो गया, that's not covered because that's a stupid thing what he is doing it. So under influence, कुछ भी wrong influence में अगर कुछ चीजें होती है unexpected चीजें, तो that's not covered. So policy में ये लिखा होता है when you are reading the policy. सौम्यदेव क्या बोल रहे हैं? सौम्यदेव कुछ बोला आपने? नो सर. Okay,
So that's a not covered. Now, duration of travel insurance policy. So there are different type of travel insurance policies you can take out. Single trip with number of days of travel. एक सिंगल ट्रिप होती है, उसमें सिर्फ वो ये होता है कि आप एक बार जा रहे हैं. हम लोग ने सिंगल एंट्री वीजा पढ़ा था. The same thing, single entry. If you are traveling once, सिंगापुर जा रहे हो आप सिर्फ एक बार और वापस आ रहे हो, so you take a 7 days का, if you are going for 7 days, 7 days का और 8 days का travel insurance, come back. Multiple trip, each trip is lasting for less than 30 days. So multiple trip के अगर वीजा travel insurance है, so you are actually doing it what? You are taking multiple trip travel insurance. कि आप frequent traveler हो, every month you are traveling to somewhere other for business trip, so you take a yearly visa. So that's a yearly multiple trip visa, 6 month multiple trip visa. So that's a annual travel, yearly का मैंने जो बताया, annual travel insurance policy. Some people are so much traveling, they are like traveling here and there every time for business, so they take a travel insurance policy yearly, annual policy लेते हैं वो लोग. क्लियर है ये? Yes, clear. Yes, sir. Great. So now, how to choose best travel insurance plan in India? हम लोग कुछ चीजें होती हैं जो इंडिया में अनएक्सपेक्टेड होती हैं. We should at least think when we are choosing travel insurance. So आप क्या करते हैं ना, कुछ स्टैंडर्ड ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी है, बजाज है, रिलायंस है, देन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, they are like all selling travel insurance. They all are selling travel insurance, but when you are choosing travel insurance, then you should have some like these three things which I am mentioning here, but still you can consider as based on the client requirement. Client बोल रहा है कि मुझे ना I want my flight to be covered very well, because I don't know, I am having so much connections of flight, I am traveling from this country to another to another, so I might miss the flight, so please cover my flight, take the insurance which has a maximum cover on flight changes or flight miss or cancel flight, whatever. So flight changes, your travel insurance plan must be able to accommodate changes of your travel plan, especially if it is related to flight cancellation. Flight cancel हो गया, बारिश के दिन है, ठंडी के दिन में fog है, something happening wrong, flight, so that should cover. Some policies also accommodate flight rescheduling due to unexpected event, and they may be worth considering. So some policies, if rescheduling flight होती है, then only your loss is there. If you are, suppose you are in Paris and you are flying on 15th of July evening 6 o'clock, they have rescheduled it and put it the flight next day morning 9 o'clock. So what is happening? You are actually losing a day, you are losing money to stay overnight. You have to stay overnight, either you be at the airport or you take a hotel. So some of the travel insurance policy, they allow you to pay some funds because they have rescheduled, or airline has rescheduled the flight. So you get the paid, and you pay, you reclaim later. So they allow you to do that. So such policies are always worth considering. So whenever you are thinking for yourself or your client, always think these and study these well and explain to client, sir, ये policy में these all things they have included. So please make sure you are covering these things, and you have to inform if there is something wrong happening there, you to inform immediately to insurance company. This is the insurance company email ID, and this is the contact number, or you can tell us, so we can put the request to insurance company. Because lot of time क्या होता है ना कि if your flight is missed, you are in panic situation at the airport in Paris, and you're not telling to insurance company, they don't consider it. If you come back to India and do it, they don't consider it. So you or your client always take a proof of it. This was a flight, I had a ticket 6 p.m. Now announcement from the airlines is next day morning 9 o'clock. So next day morning 9 o'clock, if something is written on paper,
ask airlines to give so that you can put it in for the insurance, or airlines can accommodate it. Sometimes airlines itself accommodate you overnight stay at the airport, hotel, or somewhere. So these conditions or this situation comes, you have to keep eyes open कि मैंने क्या किया है, मेरा insurance cover है, so I should put the request for claim. So that's the flight changes, flight rescheduling, flight cancellation. Medical emergencies. An ideal travel insurance policy should be able to facilitate a maximum possible medical assistance, especially in the event of unexpected hospitalization. मैंने पहले वाले स्लाइड में बताया था कि अब आप मेडिकल पर्पस के लिए जा रहे हो, दैट्स एक्सपेक्टेड हॉस्पिटलाइजेशन. यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है ट्रैवल इंश्योरेंस में. और मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है, इंटरनेशनल मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ केयर इंश्योरेंस, that is for expected hospitalization, because आप उसी पर्पस के लिए जा रहे हो. So यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है, तो आप ज्यादा कवर करते हो कि कल को कुछ प्रॉब्लम आ गया. So that's this should be covered. For your policy does not factor in medical ad, the expenses related to emergency in foreign land could be more than expected. तो यहाँ पे हम इमरजेंसी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग. पर्पस ऑफ ट्रैवल इज नॉट अ मेडिकल ट्रीटमेंट. Other emergency, it is hard to predict the unexpected emergency situations such as natural flood, earthquake, volcanoes. कभी-कभी ये चीजें कवर करती, robbery, war, curfew. Your travel insurance policy facilitating coverage for such emergency would ensure you don't burn a hole in a pocket to make no mistake of during trips. तो यहाँ पे आप क्या करते हो, इन नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में भी आप प्लान करते हो कि ओके I am actually going, but if there is some natural calamities happening, it should be covered, it should cover, and some policies cover that because policies में भी packages होते हैं. अभी देखना नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा, बेसिक पैकेज, advanced package, super advanced package. So they give silver, gold, platinum kind of offer. So silver लेते हो तो उसमें कम चीजें कवर होती है, गोल्ड लेते हो तो उसमें थोड़ी ज्यादा, प्लैटिनम में तो ऐसे करके चीजें होती हैं. इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखना, क्लाइंट से पूछना कि सर दिस इज रिकमेंडेड, always this happens, and if something goes wrong, this will not cover, but if something goes wrong under this criteria, it will all cover. So you should educate client as well all the time. Coverage, what you look in your travel this policy is coverage. Never assume the kind of coverage your travel insurance plan provide. Studying the policy document throughoutly to learn what kind of expenses covered during the trip, you can save time and money. So आप डिटेल में पढ़िए thoroughly, उसके बाद में आप समझिए क्या हो रहा है हमारा, हम कहाँ हमको कवर है. Additional riders, consider additional riders that can make emergency situation easier. At the time of purchasing policy, additional rider वो लोग कुछ additional top ups देते हैं कि you pay 200 rupees more, you will cover this much. You pay 600 rupees more, so you cover this much. So take always this in consideration when you are traveling abroad or your clients traveling abroad. Claim ratio, it is paramount to know that ratio of claim your insurance policy has paid on an annual basis. The claim ratio is readily available and for any policy holder, and policy would make sense only if possible, if being able to claim their expenses easily exists. So आप क्लेम रेशियो कितना क्लेम कर सकते हो. कभी कभी ये होता है कि हम लोग ट्रैवल इंश्योरेंस वाले 80% देंगे, 20% यू हैव टू पे, और दे विल नॉट कवर. लेट्स से एग्जांपल, आपका बैगेज लॉस हो गया एयरपोर्ट से, एंड दैट्स अ ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर है बैगेज लॉस, एंड दे कवर अप टू $500. They can cover up to $500, and when their baggage is lost, you are filling the form. When you are filling the form, you are writing it how much value stuff was there in the baggage. कितना सामान था, कितने रुपए का था. आपने लिखा $300 और $500 तक ट्रैवल इंश्योरेंस वाले दे सकते हैं. So what will happen? Travel insurance might give you only $250. $300 का लिखा है, लेकिन वो लोग पूरा कवर नहीं करेंगे, वो लोग कुछ परसेंटेज कवर करेंगे. So that things happens. So you always understand कितना क्लेम रेशियो मिल रहा है हमको. इवन इन द मेडिकल में भी ऐसे होता है. So try to understand that, read through it. So जब भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे या करेंगे आप, मैं एक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी आपको भेजूंगा सैंपल, मेरी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी. रीड इट केयरफुली, ऑल द डिटेल्स, तो तुमको और समझ में आ जाएगा कि व्हाट हैज बीन
mention and how you can get educated. आपको खुद को educate होना है आपकी travel insurance policy, then only you can tell to your clients. So this is how travel. How can one buy travel insurance? बताओ quickly. travel insurance कैसे खरीद सकते हो? chat पे डालो. सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेथड से ट्रैवल इंश्योरेंस वाली जो कंपनी जो होती है जैसे सर उसके माध्यम से, और ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए सर कुछ प्लेटफॉर्म भी होते हैं जो एफिलिएट लिंक हम लोग को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे सर सेटलमेंट प्रो वगैरह हो गया। सर एम आई ऑडिबल? Yes, and anybody else? Thank you, Yuvraj. Anybody else want to add? ट्रैवल इंश्योरेंस आप खुद खरीद सकते हैं क्या अपना? या हाँ या ना बताइए. Why other people are not answering today? यस सर। ओके, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस ट्रैवल एजेंसी से खरीदना जरूरी होता है क्या? यस और नो? सर जरूरी इसलिए होता है कि सर हमें जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में ट्रैवल एजेंट से, मेरा क्वेश्चन था ट्रैवल एजेंट से आपको खरीदना जरूरी होता है क्या, कि आप जी खुद सर, खरीद सकते हो? जी सर वही बता रहे हैं, ट्रैवल एजेंट से खरीदना इसलिए मैंडेटरी या जरूरी होता है कि जैसे कि हमारे हमारे पास सर उस इंश्योरेंस के बारे में क्या चीज कवर है क्या नहीं है, क्या या या किस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, ये सब सर डीपली जानकारी नहीं रहती है, तो सर ट्रैवल एजेंट से ही खरीदना बेटर होता है सर। मैंडेटरी होता है ये नहीं कहूँगा सर। एम आई ऑडिबल? यस. So I was reading some answers on the chat. So everybody's right. Pritam is saying yes, we can buy through aggregator, we can buy through directly companies or travel agent. Some insurance companies we can buy those travel insurance directly, or not necessary to buy from travel agent. If you or your client is frequent traveler, they know what kind of policy they have to buy. So there is no need to tell them. They can always plan कि हम लोग कौन सी पॉलिसी लेनी है, कौन सी कंपनी की लेनी है, and they can buy on their own. क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे तो that they will put a surcharge, but sometime travel agent gives in the package कि ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी हम आपको देते हैं. So one can buy, we can buy online, offline. We can buy through travel agent, means they can buy it online and give it to you physical copy. What document required to get travel insurance policy for international? Passport. सर वन मोर क्वेश्चन। Yes, Yuvraj. सर जैसे आप अभी बता रहे थे कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम जा रहे हैं, तो उसमें सर मैं ये जानना चाह रहे हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो उसमें सर मेडिकल इमरजेंसी जो होगी जैसे फ्लाइट में या रेल में या सर ट्रांसपोर्ट में, तो वो कवर है कि नहीं? मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज से ही जा रहे हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज से जा रहे हो तो आप मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो, आप इंटरनेशनल हेल्थ केयर या मेडिकल इंश्योरेंस, आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हो, लेकिन उसका अगर कवर, उसमें अगर लिसन टू मी, उसका अगर कवर है, इट ऑल डिपेंड ऑन द पॉलिसी, व्हाट पॉलिसी यू आर बाइंग एंड व्हाट कंपनी इज कवरिंग व्हाट. So a lot of time they
they cover it. Lot of time they deny that this is the medical insurance. Your purpose of travel is medical treatment, so we will not be able to do it. If your purpose is medical treatment, or you have already taken the international medical policy, that hospital will pay you. But in between का जैसा passport loss हो गया, for example, medical treatment के लिए जा रहे, that will definitely cover. Understand, Yuvraj? यस सर। सर मैं इसलिए पूछ रहा था कि इसमें तो अनएक्सपेक्टेड होता है ना इंश्योरेंस में कि ये हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही जा रहे हैं और उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस हम ले रहे हैं सर, तो उसमें क्या मेडिकल इमरजेंसी कवर होती है? It will cover, but it all depend on the policy. युवराज, मैं बता रहा हूँ आपको कि पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है. इन जनरल आपको पॉलिसीज को स्टडी करनी पड़ेगी जब आप बाय कर रहे हैं क्लाइंट टू क्लाइंट, और उसको अंडरस्टैंड करके इवन यू कैन आस्क पॉलिसी कंपनीज दैट इफ माय client is going for medical treatment and if there is something goes wrong in the flight, will this cover? So Yes. they will answer you well. I cannot answer because the policies are different, companies are different, and conditions are different. We have to Yes, get a general awareness about that. So in this session we are understanding general awareness कि क्या चीजें होती हैं और उनको कैसे उनको overcome किया जाता है, कैसे उनको clarify किया जाता है. So always ask if the client is asking, okay, if something goes wrong, I'm going for medical treatment, will it cover? Will it cover? Will it cover? Ask same question to insurance company, they will give you answer. They'll say no, they'll say yes. Okay, but sometime it covers, sometime it doesn't cover. It all depend on the policy. अभी क्या होगा ना कि there are lot of situational cases होंगे. Situational cases में you will not predict क्या हो रहा है. I'll give you my example. My baggage was delayed. 3 days, after 4 days, my baggage was arrived at my home. I did not claim because I was not eligible to claim. Baggage delay was there in my policy. I did not, because baggage delay, I arrived in India. After that, I got to know that my baggage is delayed. So already in my home country, they don't cover. My policy, they did not cover that you are already in a home country. We will not cover anything in your home country. We will only cover in a foreign land. So such situation comes where you will see lot of time insurance policy deny, because they are technically they are writing everything, maybe we don't read it properly. So that happens, and these things you need to keep in mind, and always consult with your travel agent or insurance policy call center. Understand, read it through, email, take an email and new email reply and keep it with you, so that you have a proof that you are actually claiming this, that. Okay, now documents. In passport, duration of stay, date of travel and return, declaration of any prior existing illness, contact person detail, relationship, address and contact details. Simple. Domestic में you will not have a passport, you will have an identity card, date of travel, confirmation of travel, contact person detail, address and contact. So you are actually adding passport, visa, those things you are adding in insurance, international passport especially, and duration of stay. यहाँ पे भी आप date of travel and domestic. So domestic insurance is also very much popular these days. I will tell you next slides. How the premium to be calculated? There are various factors. Premium क्या होता है? जो हम लोग पे करते हैं, right? हम लोग ने ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 600 रुपीज पे किया एंड 6 days कवर किया. So we are paying to travel company this premium amount. There are various factors considered by an insurance provider to offer the appropriate package. There are different packages. The below component decide the cost of travel insurance. Age of traveler. आपकी एज ज्यादा है, the premium is more. हम लोग हमेशा देखते हैं ये ज्यादा होता है, ज्यादा प्रीमियम होता है. डेस्टिनेशन ऑफ ट्रैवल. यूएस की पॉलिसी है, आपको एक्सपेंसिव रहेगी, यूरोप की एक्सपेंसिव रहेगी, सिंगापुर की सस्ती रहेगी, दुबई की सस्ती रहेगी, ऐसे. ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल. इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर 1 week is cheaper. If you are traveling for 6 months, it's expensive. So simple. Premium calculate on these factors.
So depend on the company to company, they calculate their premium. Certain insurers and packages might require some of the below. Medical reports, history की बात कर रहे हैं हम, medical history की, they require it all the time. That okay, you have to put it. If they are a old age people or there is some illness is there already, they require history. Declaration of pre-existing medical condition. अब तुमने already declare नहीं किया है. If the patient is, let's say, patient is for blood pressure or heart patient, and you are actually not declared. So what happens? You are and that something goes wrong. So that's not good. You have to declare that this patient is a heart patient. There is a already treatment is going on or some operation has been done. Country specific requirement. There are some countries they have a specific requirement for a specific insurance or premium. How much we pay for travel insurance domestic? Okay, travel. This is a Tata AIG. I'm giving example. Tata AIG. You put traveling to. You put the city name. You put travel start date, travel end date. So I'll send you the links also in the email. Try to check. Try to play with it. So you will understand that how it works. Now. Domestic travel guard 218 rupees inclusive of GST. Cover 20,000 per traveler. Accidental medical expensive 20,000. Loss of ticket up to rail air up to 20,000. Missed departure rail air up to 10,000. Accidental death reimbursement benefit 50,000. So this will cover in 218 rupees. Plan A. Plan 1, plan 3 and plan 5. So this is 655 and this is 1092 and this is covering 1 lakh rupees. So based on the plan, they are actually giving similar benefit, but the amount is different. Understand? Yes, no? Sir. Yes, Yes. sir. It's very clear and I will send you the link. Link में आप देखेंगे. You will play with it. आप गोवा का करिए, आप मध्य प्रदेश लिखिए, आप ड्यूरेशन कम ज्यादा करके देखिए. You will see that differences. पेन पेपर लेके बैठना. You will see the differences. 218 को का 350 हो जाएगा, 400 हो जाएगा. Depend on the duration, it will increase. Depend on the age, it will increase. Okay, so this is how you have to plan or you have to check. This is a Tata AIG. Now guard. Here we already checked in the last slide. Travel and medical. Travel में loss of ticket 20,000. Personal liability 1 lakh. This one, I'm talking this one. View benefit 218 one. Accommodation charges due to trip delay 1,500 per day. Emergency family travel 10,000. Missed departure 10,000. Medical. Travel and medical. So this is medical. This is travel. Accidental death 50,000. Body वापस लाना है 10,000. Accidental medical expenses benefit 20,000. Accident है ना, वहां पे accident हो रहा है तो emergency medical 10,000. Evacuation है ये. Emergency medical हुआ वापस, अगर heart attack आ गया, so you have to bring back the person. So that's the 10,000. In hospital indemnity accident only. यहाँ पे 500 sum assured. In hospital. Assistance service included accidental death for and disbursement common carrier 50,000. So depend करता है और यहाँ पे आप सारी details पढ़ सकते हैं. Question mark में click करेंगे, you will have it all the details. So some of the policies cover few things, some of the policy covers more. So all you have to understand कि basic कौन सी है और इसमें क्लाइंट को पूछ के कि आप कितना प्रीमियम पे करना चाहते हैं. इफ दे आर रेडी टू पे 1,000 रुपीज, गिव देम 1,000 रुपीज का, इसमें ज्यादा का कवर हो जाएगा. जनरली इट्स One more Yes. question. यस. Sir, you tell that emergency family travel.
तो सर डोंट डोंट टेल दैट डिपार्चर में सर। what you said? सर ऐसा आपने बताया कि सर इमरजेंसी जो है वो फैमिली ट्रैवल उसमें सर डिपार्चर इंक्लूड है, लेकिन सर डिपार्चर इज नॉट इंक्लूड ना। बट सर ये ऐसा है कि इसमें जो इमरजेंसी फैमिली ट्रैवल है सर, इसमें सर में भी ये होता है कि जैसे कि इमरजेंसी आ गई और हमको उसी उसी दिन या उस समय के अंदर ही हमको लौटना पड़ा इमरजेंसी, तो सर वो कवर होगा ना, डिपार्चर नॉट कवर ना सर। इमरजेंसी फैमिली ट्रैवल आपको इमरजेंसी के लिए आपको आना है वापस, जी सुपर सर इमरजेंसी, सर तो आपको इमरजेंसी के लिए अगर ना तो वो कवर हो जाएगा ना। हाँ सर वो तो कवर है ना, उसी का डिपार्चर कवर है ना। अगर हम वो टाइम टाइम पूरा करके आ रहे हैं बिना इमरजेंसी के, तो दिस इज नॉट कवर नो ना सर। नो, इट्स नॉट कवर। आप अगर इमरजेंसी आप डालते हैं कि मेरे घर में किसी की डेथ हो गई है, आई हैव टू गो, यस दैट सर कवर। सर क्लियर। ओके, नाउ इंटरनेशनल में सिमिलर थिंग, मैंने ये टाटा का ही एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ ट्रैवल एनीवेयर स्टार्टिंग एट 40 रुपीज पर डे, इंटरनेशनल ट्रैवल। यहाँ जर्मनी लिखा है मैंने, जर्मनी। आई हैव 7 डेज का प्लान, 8 डेज का। यहाँ पे ये प्लान्स आ गए, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। 1750, 1400, 1100, 500,000 मीन्स $5 लाख का कवर हो रहा है। यहाँ पे 2.5 लाख का हो रहा है या 1 लाख का हो रहा है, डिपेंड ऑन द अगेन बेनिफिट। सो एंड यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन डाली है, ट्रैवलर वन डाला, अपना डेट ऑफ बर्थ डाला है। बेस्ड ऑन दैट दे आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग इट। आई टोल्ड यू कि बेस्ड ऑन एज कैलकुलेशन हैपेंस। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ डेज, डेस्टिनेशन एंड एज, ये 3 चीज अगर मैंने डाली है, उसके बेस पे ही मेरा कैलकुलेशन आया है। इफ यू चेंज दिस, द कैलकुलेशन विल बी डिफरेंट। सो Tata AIG link I'll send you, or you can find it out also and check all the time. आपकी प्रैक्टिस करने के लिए आप चेक करना कि how it is changing. Now this one हम लोग प्लेटिनम के ऊपर है, सिल्वर है। प्लेटिनम cover accidental sickness, medical expenses reimbursement up to $5 lakh, accidental death $5,000, accidental death benefit up to $25,000, emergency medical evacuation benefit, reprotection remain, body को वापस लाना है, sickness dental relief 1,000। गोल्ड में ये है, ये हो गया मेडिकल का। मेडिकल, ट्रैवल एंड बैगेज, हम ट्रैवल का देखते हैं अब। फ्लाइट डिले, डिडक्टेबल ऑफ 12 आवर्स $10 पर 12 आवर्स, मैक्सिमम $100। ये इतना देता है फ्लाइट डिले का। मैक्सिमम $100 देंगे, पर 12 आवर्स का $10 मिलेगा। मिस्ड करेक्शन, मिस्ड डिपार्चर 1000, ये डिडक्शन है, $100 डिडक्शन करते 900 मिलेगा। हाईजैक मैक्सिमम $500। बाउंस्ड होटल, एयरलाइन बुकिंग बाउंस हो गई $1000। फ्रॉडमेंटल चार्जेस, फ्रॉडलेंट चार्जेस, ट्रिप करप्लेटमेंट 1000, ट्रिप कैंसिलेशन, लॉस ऑफ पासपोर्ट बेनिफिट 250, पर्सनल लायबिलिटी बेनिफिट $5 लाख, इमरजेंसी कैश एडवांस। इमरजेंसी कैश, आपको कैश चाहिए वहां पे जर्मनी में, so they can give you the $1,500, but they will charge after, you have to pay after coming back। ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी अप टू 7 days, ये ऑटोमेटिक एक्सटेंशन हो जाता है। दिस इज अ गोल्ड वन। नाउ बैगेज, होम बल्गरी 20 था, ये 2 लाख रुपीस।
चेक्ड इन बैगेज लॉस, वन चेक्ड इन बैगेज लॉस, देखो यहाँ पे एयरलाइंस का बैग अगर लॉस हो जाता है, एयरलाइंस अगर लॉस करती है तो $1000 मिलता है। बैगेज डिले बेनिफिट आफ्टर फर्स्ट 12 आवर्स $500। सो 12 घंटे तक के अगर बैगेज डिले है $500 मिलता है। सो दिस इज हाउ यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग। कुछ और डिटेल पढ़नी तो उसमें उसके सामने आई रहता है ना, आई, उसमें पढ़ सकते हो आप डिटेल और समझ सकते हो क्या चीजें होती हैं। काफी टाइम पे ये चीजें हमको पता नहीं होती है और हम इतना डिटेल पे जाते भी नहीं है। दस वी गो फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है, बट दिस इज काइंड ऑफ अ कवर वी आर गोइंग टू गिव। प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर हम लोग ले लेंगे ऐसे, बट one should have career in travel insurance. You should have you should understand this in detail. Companies offer travel insurance. कोई क्वेश्चन है इधर तक? Any question? Okay. Tata AIG travel insurance, Reliance travel insurance, like ICICI Lombard, HDFC, Bajaj Finance, Bajaj Alliance, Bharat Brahman insurance policy. Look at this. Bajaj Alliance ने डोमेस्टिक इंटरनेशनल की पॉलिसीज निकाली है। बजाज फिनसर्व ट्रैवल, स्टार हेल्थ केयर इंश्योरेंस, गो डिजिट ट्रैवल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल, रॉयल सुंदरम यूनिवर्सल संपू ट्रैवल इंश्योरेंस ट्रैवल वर्ल्ड वाइड। फ्यू ऑफ द कंपनीज जो टॉप पे है और दे आर वर्किंग। कंसोलिडेटर्स हमने बात की थी, पॉलिसी बाजार, बैंक बाजार, ये लोग भी ट्रैवल इंश्योरेंस देते हैं। जॉब्स, if you are trying to create career or you want to build a career in this segment, there are a lot of jobs. Look at this side. 0 to 5 years travel insurance BPO customer service. Then you have this unit sales manager, 0 to 5 years. Sales manager travel insurance Bangalore, 1 to 6 years. How many jobs are there? There are 44,915 jobs are available in travel insurance. So travel insurance is another sector where you can plan to build career. All insurance company hire travel insurance professional. All banks hire travel insurance professional. Big corporates hire travel insurance professional. Work independently. आप खुद से travel insurance अपनी company खोल सकते हैं, and you can tie up with all the travel insurance companies and give to services to travel agent. ट्रैवल कंपनीज इंश्योरेंस एक्सपर्ट, जैसे थॉमस कुक के पास में ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए ओपनिंग होती है कि यू गो एंड यू वर्क विद देम इन द ट्रैवल इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सपर्ट. So this is the way you can plan your career in travel insurance. Okay, so I think I am good with travel insurance. Any question here? Any question? Anyone? Any thought? सर अभी आप कंपनी के बारे में लिस्ट बता रहे थे सर, उसमें ऐसा ही है कि सर जैसे कि हम लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म के ही स्टूडेंट हैं, तो सर उसमें सर कंपनी हम लोग को सर अपने अपने को प्रमोट करने के लिए एफिलिएट लिंक वगैरह, जैसे कि सर एजेंट टाइप का होता है, और सर प्रैक्टिस के लिए सर दे सकती है क्या एफिलिएट लिंक? और सर कौन सी ऐसी कंपनी है जो देती है, और सर कौन सी ऐसी ट्रैवल एजेंसी है जो सर स्टूडेंट को भी सर एफिलिएट के लिए लिंक वगैरह देखो, प्रोवाइड ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनीज तो सारी इंश्योरेंस कंपनी तो सारी लेती हैं, और जी आप सर। ट्रैवल इंडस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपके लिए एडवांटेज रहता है, बिकॉज यू जी ऑलरेडी नो ज्योग्राफी, यू ऑलरेडी नो एयरलाइन, यू ऑलरेडी नो होटल, यू ऑलरेडी नो बैगेज, यू ऑलरेडी नो पासपोर्ट, वीजा, सब पता रहता है आपको. एटलीस्ट यू आर फैमिलियर विद द टर्म्स. सो आपके लिए जी सर। इजी तो होता है उनके साथ में जॉब करना, वो लोग के लिए इजी होता है आपके साथ में आपको हायर करना. नाउ ट्रैवल कंपनीज जो बड़ी ट्रैवल कंपनीज हैं, थॉमस कुक हो गया, आपकी मेक माई ट्रिप हो गया, दे ऑल हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस डिपार्टमेंट. जितने उनके टूरिस्ट होते हैं सबका ट्रैवल इंश्योरेंस वो लोग करते हैं. So they hire people to
issue those policies, also handle the policies. अगर कल को कुछ प्रॉब्लम आता है उनके क्लाइंट के साथ में, उनका बैगेज लॉस है, तो वो यहाँ से उनको असिस्ट भी करते हैं. सो दैट्स हाउ दे हायर ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सपर्ट. और एक्सपर्ट आप कब बनते हो? आप धीरे 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 यू गो इनटू दैट segment and you grow from there. And banking insurance segment gives you good salary as well. तो यहाँ पे आपको एडवांटेज भी होते हैं. बट यू मेक अ करियर इन ट्रैवल इंश्योरेंस ओनली, देन यू प्लान टू गो. सर जैसे ट्रैवल एजेंसी, जैसे सर ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी सारी देती है, उसी तरह सर ऐसी भी ट्रैवल एजेंसी होगी सर जो हम लोग को सर प्रैक्टिकल के लिए या सर अपने प्रमोशन के लिए या सर फील्ड के नॉलेज के लिए सर एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह दे रही है? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे करियर प्लान करते हैं. बट अगर आप ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, ट्रैवल एजेंसी सिर्फ आपको, छोटी ट्रैवल एजेंसी आपको सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं रखेगी. आपको अगर ट्रैवल इंश्योरेंस का ही काम करना है तो यू हैव टू गो इन अ बिग एजेंसी और इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है. और एफिलिएट वगैरह तुम बोल रहे हो बार बार. एफिलिएट इज व्हाट यू इंडिविजुअल टेक अ 3 और 4 ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी का काम, और आप सारे एजेंट के पास जाओ, मिलो उनसे, बोलो हम ट्रैवल इंश्योरेंस करते हैं, दे विल गिव यू ट्रैवल इंश्योरेंस का. बट दीज डेज एवरीबॉडी इज डूइंग इट ऑनलाइन. अपने ऑफिस सब ऑनलाइन करते हैं. ठीक है. सो यू हैव टू प्लान, इफ यू आर रियली सीरियस, you can plan to go for this segment for of a job. ठीक है. सर एनी मैं अदर ये क्वेश्चन? हाँ बोलो सर युवराज. मैं सर मैं ये जानना चाह रहा था कि सर ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए तो सर सारी कंपनी देती है सर, लेकिन ट्रैवल एजेंसी कौन ऐसी है जो सर हम लोग को सर थोड़ा सा मतलब वो करेगी, जैसे कि सर हम लोग प्रैक्टिकल करना अगर चाहेंगे किसी का एफिलिएट लिंक लेके, तो सर कौन सी ट्रैवल एजेंसी है जो हमको सर एफिलिएट लिंक युवराज, वो तो बहुत देगी? सारी एजेंसी है. इट ऑल डिपेंड ऑन यू. तुम जैसे कहीं कहाँ बैठे हो, तुम अगर हरिद्वार में हो, हरिद्वार की एजेंसी के पास जाओ, वो प्रैक्टिकल नॉलेज देगी आपको. वहां पे एजेंसी में काम करो, बट काम करने के पहले नॉलेज बनाओ अपना. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो है, आपने समझा, ट्रैवल इंश्योरेंस इज सेल्फ इज सेक्टर. आप काम कर सकते हो, बट आपको सारी चीज सीखनी, तो यू हैव टू गो फॉर एजेंसी जहां पे आप डे टू डे हर चीजें सीख सकते हो. बट उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए. दे विल नॉट अलाउ यू टू वर्क इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज. Okay. Preetham is saying most of the countries have rules to cover the flight delay, baggage loss by airline. If someone has compensated by airline, these issues are eligible to make claim. No, you cannot get claim if you are getting it by airlines, because airlines आपका इंश्योरेंस की कॉपी रखती है साथ में. आपको पूछती है कि if you have insurance, and they put it the insurance copy together. If don't have a insurance copy, then there is the different situation. But airlines maybe there is a some part you pay for the travel insurance या फ्लाइट इंश्योरेंस जो भी बोलते हैं वो अपने जो ट्रैवल कर रहे हैं. सो इट ऑल डिपेंड कि आपका अगर उधर क्लेम हुआ है तो इधर, क्योंकि वो लोग आपका इंश्योरेंस कॉपी दे आस्क यू इफ यू हैव इंश्योरेंस कॉपी. एंड सिचुएशनल्स भी होती हैं ये चीजें. and it all depend ki if you have already got claim, no second claim you won't get. एयरपोर्ट एयरलाइंस वहीं के वहीं अकोमोडेट कर देती हैं कभी कभी. so you are not eligible to apply for claim, क्योंकि एयरलाइन इन्फॉर्म करती है ना इंश्योरेंस कंपनी को भी कि वी आर कवरिंग इट, दिस इज एन our offering. So that's how they are actually working together to reduce the claim. Otherwise तो कितना क्लेम चला जाएगा यार प्रीतम. means it's not a business viable ना कि you are getting claim from three places. No. I hope clear. Any other question? Any other thought? Okay, we take 5 minutes का break and
We start Forex. Okay, so I will just you'll take a 5 minutes break. 5 minutes in between. You just try to check टाटा AIG. मैं आपको बता रहा हूँ अभी टाटा AIG यहीं से बता देता हूँ, रुको. टाटा AIG ट्रैवल इंश्योरेंस. ये लिंक है, बड़ी लंबी सी लिंक है, पर ठीक है. ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया. ट्रिप स्टार्ट Sunday 23rd. Come back 30th. Get a plan. Now here, traveling in 15 days. Traveling self. I put the age. If you have to, you are adding your spouse, son, daughter, father, mother, you can add. So that plan will come for 2 people. Yeah, travelers 1 है अभी. Number डाला मैंने. C plan. ये रहे plans आगे. 21 benefits, 18 benefits. Silver को हाईलाइट कर रहा है. Preferred, यहाँ preferred दिखा रहा है. Platinum preferred. $5 lakh cover per traveler. ठीक है, इस टाइप के. You also look into it. मैं यहाँ पे खोल के रखता हूँ इसको. ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पे, ये ट्रैवल के लिए, सॉरी मेडिकल के लिए, ये ट्रैवल के लिए. You see, trip cancellation. So they are actually mentioning everything very clearly. What you are actually baggage loss. We will pay compensation if your checked-in baggage is permanently lost while in custody of a common carrier. Permanently lost, then only delay. If your baggage is delayed or misdirected, we will pay compensation for the expenses of necessary personal effect. Expenses of personal effect. आपको बैग में क्या रखा है? आपका कपड़े रखे हैं, आपका डेली यूज का सामान रखा है, आप उसके लिए ही आपको बैगेज डिले का पैसा मिलेगा, क्योंकि वो रीडायरेक्ट हुआ है, कहीं मिसडायरेक्ट हुआ है और वापस आएगा. वो डिले है लेकिन आएगा वापस. ये बर्गलरी का के बारे में लिखा हुआ है. विल पे लॉस और डैमेज कॉज इन केसेस ऑफ बर्गलरी और एनी अटेम्प्टेड बर्गलरी ड्यूरिंग द ट्रिप. सो ऐसे करके आप सारी की सारी एक्सप्लेनेशन वहां से देख सकते हैं और वो क्लाइंट को भी बता सकते हैं. क्लाइंट को भी आपको समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज कवरिंग, अदरवाइज क्लाइंट को समझ में नहीं आएगा और क्लाइंट बोलेगा समथिंग इज रॉन्ग और समथिंग इज आई हैव नॉट अंडरस्टूड विथ माय पॉलिसी. क्या करना है पॉलिसी का. मेडिकल डेंटल रिलीफ, जनरली डेंटल रिलीफ होता नहीं है. ये बॉडी वापस आना, रिपीटेशन ऑफ रिमेन्स, ये वाला दिखा है. एक्सीडेंटल डेथ, we will pay compensation for death or injury occurred. You were riding as a passenger in a onboarding or aligning from the common carrier. ये airlines के लिए है. ये airlines के अंदर है. common carrier, accident or sickness, medical expense reimbursement. If you are sustained any injury or sickness during your trip, we will reimburse you the expenses incurred. यहाँ पे देखो, ट्रिप के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इंजरी हो रही है, सिक हो रहे हो आप, देन ओनली दे विल गिव यू. वी विल पे कंपनसेशन for death or injury incurred during the trip. It also include felonious assault. ये क्या होता है? So such a way you can always understand. Okay.
hijack, personal liability, missed departure, missed connection departure. Like let's see, we will reimburse you for inconvenience in case of missed connection or missed departure due to covered hazard. यहाँ पे कवर्ड हजार आपका उनका कवर्ड हजार है, उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये इसका $1000 मिलेगा, 10 डिडक्टेबल $100 डिडक्ट कर लेंगे बोलो। तो ऐसे करके आप अंडरस्टैंड करो, डोमेस्टिक भी देखो और इंटरनेशनल भी देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी डिटेल, आपको आंसर्स आने चाहिए। माय एजेंडा इज कि यू इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एज अ concept, you should know at least 70%, 75% of it so that you can answer well. Okay, give me 2 minutes, I'll come back and then we start the session. ओके, सो व्हाट इज फॉरेक्स, कौन बताएगा? फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स
फॉरेक्स, फॉरेक्स क्या होता है? व्हाट इज फॉरेक्स? Foreign exchange, bringing other countries' currency in exchange for our currency. ओके, फॉरेन एक्सचेंज, ओके। एंड अपनी ट्रैवल इंडस्ट्री में हाउ इट इज यूज्ड एंड व्हाट इज द पर्पस? सर इसमें ट्रैवल इंडस्ट्री में इसका ये पर्पस है कि सर जैसे कि मैं सर ये अमेरिका गया या वियतनाम गया या कहीं दूसरा कंट्री गया सर, इंडियन करेंसी लेकर के सर, तो वहाँ पे सर एक्सचेंज कराना पड़ता है और इसी से सर हमारी रेवेन्यू भी इंक्रीज होती है। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस इंडस्ट्री। एनीवन एल्स वुड लाइक टू ऐड? फॉरेक्स का पर्पस और यूज क्या है मींस इन आवर इंडस्ट्री? हम लोग फॉरेक्स Sir, क्यों यूज करते हैं? यस यस, sir, tourists can store a amount of money, the exchanged money to the country they are traveling. tourists can keep the money, their country money when they are traveling, right? Yes, sir. तो पर्पस क्या है उसको पैसे रखने का? क्यों रखते हैं हम लोग वो पैसे? Why we are keeping foreign currency in our pocket when we are traveling? सर पर्पस है कि इजी टू वे हो सर खर्च करने में, और इजी इजी हो सर वहाँ पे हमारी दूसरी कंट्री में सर उसका, और सर उसमें सर थोड़ी सी रेवेन्यू भी इंक्रीज होती है, और सर इससे सर इंटरनेशनल रिलेशन भी बॉन्ड हो रहा है सर। Okay. Mainly it is necessary for us to use that country's currency because our currency might not be accepted in those countries. So it is required for the tourist to have foreign currency which country they are visiting. Right, correct. If Yes, somebody is yes, coming to yes. India, This is right. yeah, correct. Somebody is traveling to India from New Zealand and they want to eat vada pav or let's say nashta they want to have it. So which currency they will use to have a nashta? Rupees. Indian rupees, right? So when they use Indian rupees, they buy somewhere Indian rupees, right? Yes, sir. Yes So sir, allows when they are sir. buying, either they are buying in their own country, in New Zealand, if the currency is available, or they buy it at the airport. Again, if the currency is available at the airport foreign exchange centers, or they come to India and buy it at Delhi airport. कहां चांसेस ज्यादा रहेंगे करेंसी अवेलेबल होने के? Delhi airport, sir. दिल्ली एयरपोर्ट, राइट? सो दिल्ली एयरपोर्ट पे करेंसी बाय कर रहे हैं और दे आर गिविंग न्यूजीलैंड करेंसी टू दिल्ली, मींस हमारी ट्रेड की बात की ना किसी ने, यहाँ पे दुषिता ने बोला ट्रेड की बात की, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। हमारी कंट्री में न्यूजीलैंड की करेंसी रिजर्व होते हैं ना, हम फॉरेक्स रिजर्व होते हैं हम लोग के यहाँ पे, फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, देन दे स्टार्ट ट्रेडिंग, दे बाय थिंग्स, गवर्नमेंट ट्रेड होते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे दे डू फ्यू थिंग्स, इफ दे आर like enough of dollars they can buy something in dollars, something like this. So anyways, that's too much on a top level, but easy, they come, they buy at the airport in Delhi airport, or if they buy it in their own country, good, otherwise they buy it in Delhi airport and use it for nashta, chai, or whatever they want to do it. So it's required एज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वैसे ही करेंसी रिक्वायर्ड होती है। कुछ कुछ जगह पे पीपल दे डोंट बाय बिकॉज दे ट्राई टू यूज कार्ड्स। सो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, कार्ड्स के बारे में। बट फॉरेक्स इज अ काइंड ऑफ
process where people buy foreign exchange or foreign currency for any purpose. Traveling is a main purpose because हम लोग अभी tourism industry की बात कर रहे हैं. Okay, read this definition. The purpose of changing currency of one country to the currency of another country. There can be multiple reasons of doing this, like commerce, trading, business, and tourism. Understood? Second point, who will explain? Commerce, trading, business. How this is, Forex is helping this. Commerce, trading, and business. Any example? Import of oil, Yes. And any other goods and services if you are buying it from abroad and we are paying them in their currency. Okay, so that's the multiple reasons, and one of the reason is tourism, which we are understanding. Foreign exchange currency, Forex. Need of Forex for outbound and inbound travel. Outbound and inbound travel. Traveling to another country will require you to carry the local currency that is accepted in the destination country. Local currency. Alternatively, client can carry universal currency which is globally accepted, which is like a USD. USD, US dollar. People accept it everywhere almost. Okay. Similarly, foreign citizens visiting India need to carry Indian local currency, which is INR. Clear? Outbound के दो points हैं, inbound का एक point है. कोई example देगा मुझे इस पे? If Indians are traveling abroad, what they have to do? Which country? Any example? Yes, quickly. Example. Outbound. Example. Any currency. Use any currency. I need example. If person is traveling from India to X country, what currency he will carry, and so on. so if from India, if we are traveling to any Schengen countries, we need to carry pounds, No pounds, euros, Preetham. euros, sir, euros, sir. Okay. Yes, sir. Pounds, we are traveling to UK, a British UK, territory. UK, yes, sir. Australian dollars, we are traveling to Australia, we will use Australian dollars. We will use Singapore dollar if you are traveling to Singapore. New Zealand dollars, New Zealand, and then so on. There are a lot of other currencies in different countries. Every country has their own currency, so we can carry. Otherwise, can carry US dollar and exchange there. Okay, so that's a outbound. Inbound. Example of, we have already mentioned New Zealand. People are traveling from New Zealand to India. They will be buying it in New Zealand, or they will buy Indian rupees at Indian airport or exchange houses. They bring their own currency and buy it here. So that's the inbound. Important currencies for travel industry. The currency you can carry depend on largely the destination country that you are traveling to. Means you can easily get. There's a lot of different small countries around the world. We might not have easily available their currency in India. If we are having the currency, we can buy, not maybe the smaller cities, but bigger cities we can get it. But if there is no currency available, we can always carry currencies like USD, Euro, which is globally accepted and easily can be exchanged.
Although it is good to carry a local currency of the destination country most of the time, but for certain countries carrying universal currency is more feasible. आप अगर उन currencies को लेके जाते हैं and you suppose you take a Malaysia, you're going and you're taking Malaysian ringgit. Malaysian ringgit you are taking and 5,000 Malaysian ringgit, and that 5,000 Malaysian ringgit is you're not able to use it properly. So you have to come back and give return to the foreign exchange office and get the INR. So that's also you can do. If USD is there, you can always keep the USD with you. So it is good to carry local currency, but also it is good to carry the USD and euro that is universally accepted, because you will pay a lot of money in exchange, giving back to the foreign exchange office and taking the INR, they will deduct the money. So try to balance it, that keep few which can be easily utilized or easily used in that country, and rest of the money for emergency can keep it for USD. So USD is always, if somebody is going to, let's say after that, Malaysia, Sri Lanka, so you can always Sri Lankan rupees you can convert from USD. So that's how some people do it when they are frequent travelers. So the 3 points covering USD and euro, which is easily acceptable and you can use it. Need for no, this is done. Prepaid and Forex card. किसी को पता है ये prepaid cards क्या होते हैं? कोई बताएगा, कोई गेस करेगा प्रीपेड कार्ड्स? सब प्रीपेड कार्ड सब में भी ये होते हैं कि उसमें सर कुछ बैलेंस होते हैं, जैसे कि सर और जैसे सब मेट्रो कार्ड वगैरह होते हैं सर, उसी टाइप के। Right. So prepaid cards are the cards, or Forex cards are card. We are carrying it with the balance. Some हम top up वहाँ पे डलवा के पैसे डलवा के लेके जाते हैं हम लोग. So Forex cards are prepaid travel card that you can load with foreign currency. आपने एक कार्ड लिया किसी बैंक से, उसको बोला मुझे इसमें $500 डाल दो. I'll use this $500 when I'm traveling to US. So $400 में डले हुए हैं, आपने उसी कार्ड से पेमेंट किया, because most of the places now people started accepting cards, shopping, food, restaurant, tickets of the amusement park or centers or recreation centers, airport lounge, hotels, everywhere they are using card swap machine. So you can use that card and deduct the amount whatever you have loaded in that card, that currency. अगर आपने $500 लिए डाला हुआ है, $500 उसको यूज कर जाते हैं और उसको आप टॉप अप भी कर सकते हैं. If you ask that, okay, now my $500 is finishing, in India you can request your bank, transfer the money to the bank, and they will top up the account again more $500. So you are actually safe, you are not carrying cash with you. Forex cards can be used just like a credit card or debit card to pay expenses in local currency abroad. Similar like a card. Okay? Safe and reliable, chip and pin technology. Forex card has been corrected rate than the foreign exchange currency. So better corrected rate. यहाँ पे rates fluctuate नहीं होते हैं, यहाँ पे standard रहते हैं, एक बार ले लिया और चलते रहते हैं. अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो आज का रेट कुछ है, कल का रेट कुछ है, and the bank they charge lot of in between charges. So अपना क्रेडिट कार्ड, Indian credit card, it's not kind of advisable to use Forex card. It can also be used to withdraw local cash from the ATM. International approved card होते हैं कुछ, वहां पे ATM आप से पैसे निकाल सकते हो कैश. जैसे कार्ड में आपके $500 है and you want to keep it $100 in cash with you to pay it for taxi or some small expenses where there is no card allowed or no card accepted. You can keep it $100 cash, $400 in the card. So आप लोग ATM से निकाल सकते हैं. Foreign currency loaded on the Forex card or card fixed rate
and does not fluctuate currency movement in the forex market. ये fixed loaded currency रहती है. आज आपने load किया तो ये अगर ये 4 दिन बाद currency का rate change हो रहा है, it will not affect because today is loaded means loaded. There can be two types. So this card is only used for foreign countries. Yes, foreign travel or international travel. You cannot Yes, keep sir. the card and sit in India. Okay. So this is a method of foreign currency is digitally used. Sorry. This is a method of foreign currency is digitally Yes, used. digitally used. Yes, digitally used. Yes. There can be two types, multi-currency card or one currency card. Multi-currency card. Why? Because if you are traveling to 3 countries, US, UK and Europe. In US, But some debit card is allowed in foreign countries, ना सर, जैसे वीजा debit card हुआ सर. yeah, they allowed, but they charge you. They charge you a lot. If you are withdrawing $100, you pay $110 to bank. So Yes. that's not advisable. Visa cards and for American Express card, they are there. You can use still, but they will charge you a lot because that's not a local currency. You are actually using Indian currency there, and they are converting it at the time. So that's not advisable. There can be two types of card, multi-currency and say one currency. I was telling about if you are traveling from US to London, it's New York to London and London to Paris. In New York, you are using USD because you are in America. London, you are using pounds, and Paris, you are using euros. So your card could be multi-currency card. You ask bank that, okay, put 300 USD, 200 pounds and 200 euros. They put it and then you use it. Something like this. So multi-currency card and one is a single currency card. You can put up to 14 currency at a time. 14 currency आप डाल सकते हैं उस कार्ड में. Zero charges, benefits. एग्जैक्ट इंटरबैंक रेट्स, आप सेम डे का इंटरबैंक रेट होता है. फ्री इंश्योरेंस होता है. कार्ड लॉस्ट हो गया तो आपका फ्री इंश्योरेंस कवर्ड होता है कार्ड पे, स्टोलन एनी मिस. So this is the way you are using forex card. Forex card very important for international travel, very important. So you should know this, read about this more, which all banks are actually offering it. Understand it well, and you should be ready with the knowledge that you can talk and you can share and you can practice. Do's and don't while dealing with forex. Ensure carrying forex within the limit. Basic traveling quota is USD 10,000 per individual per calendar year. एक साल में $10,000 आप खर्च कर सकते. So this card is allowed of all foreign countries. No? Sorry. So this card is allowed of use in all foreign countries. Yes. In a card, sir? Yes, yes. It all depend on the bank, which all countries they're dealing and which all currencies they can put. Yes, sir. If you are going to a small current country and they don't have any relationship or bank does not have, they will not do it. They will put it in a dollars. Yes, sir. Okay, so do's and don't while dealing with forex. So $10,000 आप एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में, एक साल में एक one person can take the $10,000 from the market, from the like a white or you can say transparency mode में, you can buy $10,000 in a year. One person. So let's say family of 4 is traveling abroad frequently, they can only take $40,000 together. An expense means they can use for expenses there. So BT, basic traveling quota. Look for genuine travel agent to deal, forex agent to deal with.
trusted. Thomas Cook Forex card or Thomas Cook Forex department, something trusted people, and lot of other companies carry some cash before reaching the destination. आपके पास थोड़ा cash होना चाहिए. Just don't put everything on a card. Keep, I told you, $100 in cash, $400 in a card, something like this. So you will not be lost. Lot of time you don't find ATM, you don't find people who accept the card. You find maybe challenges by activation of the charge. So the card, a lot of time you might suffer few things. So you carry cash with you. Avoid exchange at the airport. Super expensive. Airport exchange. Don't recommend your client to exchange foreign currency at the airport. Avoid universal currency exchange for small purchases. आपने $5 का कुछ खरीदा, so इंटरनेशनल करेंसी, अब यूनिवर्सल करेंसी एक्सचेंज मत करो, लोकल करेंसी में लो. $5 का तो कार्ड, इंडियन कार्ड से भी मत करो. आप डॉलर दे दो उसको, $5 का you will pay $5 only. Otherwise, if you pay by Indian card $5, you might pay $5.5 or $6. So that's not recommended. Preferably use card for bigger purchase. $50, $100. Use such amount. Use this card for such amounts, because small transaction you can do it with the cash. Job opportunities. Foreign exchange or foreign forex industry is the world's largest financial market. With proper qualification, there are many jobs option available, including private bank. Private bank में forex की बहुत job होती है, और forex is a big industry to work with. In travel industry, Thomas Cook is one of the largest non-banking organizations to deal with forex and at the bigger level. Thomas Cook का एक full department है forex के लिए. They only deal with the forex and foreign currencies. Private banks like HDFC, ICICI deal with forex and hire professionals. आप forex की भी job देखेंगे तो सारे बहुत job available है forex की. Can work as a forex trading expert, consultant or trader, or own a forex company setup. आप अपनी खुद की forex company भी खोल सकते हैं. There are few licenses required from RBI and SEBI and all these, but definitely you can open your own company in forex. So you deal with foreign currencies. Companies dealing into forex. These are the forex companies. Now Orient Exchange, Thomas Cook Foreign Exchange, Lulu Exchange, ICICI Foreign Exchange. Book My Forex is online. Prithvi Foreign Exchange, Kerala Post. Kerala Post is the only post office in India they provide foreign exchange, because Kerala is one of the state where a lot of people they live in abroad from that state, and also very much NRI kind of a state where a lot of people they come and invest. So Kerala, Zenith Forex and all major bank issue foreign currencies. So these are the companies list where you can plan your career if you are looking for forex. Jobs. So when you look at the jobs, 9,932 jobs forex available, and such kind of jobs are there. Thomas Cook Foreign Exchange Executive, salaries 2.93 per annum. Take home 20,000 to 22,000 is salary. Salary always increase. It's just don't stick to these salaries. They already increase, depend on you, your performance, depend on what kind of job role you're actually going for. Salaries are different. Now here, hiring portfolio, trade and forex, DBS Bank, 3 to 4 years experience, 5-10 years. So these are some forex management, forex manager. So you can see the senior jobs as well, and some 0 to 2 years job as well. So jobs are available in the market. You can always plan, and you can always prepare your career forex if you want to.
Okay, so Forex is done. It was not a lot, but it's done. Any question or any anything you want to ask or discuss? Let's discuss. If you want job side, if you are looking to go for such kind of industry to work with. Yes. Any question? तो ऐसे कौन से अच्छे बैंक हैं जो हमें सर इंडिया में सर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के लिए सर आरबीआई को छोड़ करके सर हेल्प करते हैं? बैंक्स तो सारे ही बैंक में फॉरेन एक्सचेंज करेंसी होती है। आप करेंसी लेने की बात कर रहे हैं या फिर वर्क की बात कर रहे हैं? सर लेने की बात या सर लेने की बात हो सर, या वहां से लाए हुए को एक्सचेंज करने की बात हो, या सर वर्क की बात हो सर, इस पे कौन से बैंक ऐसे हैं जो वर्क कर रहे हैं? ये सारी बैंक्स जितनी है ना, प्राइवेट बैंक्स, ये सारी, इवन द नेशनलाइज्ड बैंक्स दे यूज इट। सो फॉरेन एक्सचेंज बहुत बड़ा बिजनेस है हर बैंक के लिए। सो इट्स नॉट दैट they will not work, they will work, or they are working with forex. सर अभी अभी आपने फॉरेक्स कार्ड की बात की है, तो इसमें सर कुछ बैंक को छोड़ करके भी ऐसी कुछ प्राइवेट कंपनी होगी ना फाइनेंस वाली जो फॉरेक्स कार्ड प्रोवाइड करती होगी? Yes, जैसे एक्सिस बैंक हो है, HDFC है, ICICI, almost all big brands of banking sector, they offer you forex card. RBI नहीं देता, SBI देता है। कुछ बैंक्स, तो टॉप बैंक्स है ना, टॉप 10 बैंक्स बोल दो आप, उनके पास में फॉरेक्स कार्ड होते हैं, वो दे गिव यू। ओके। यस सर। सर मैं ये कह रहा था कि हमारा जो असाइनमेंट सबमिट हुआ सर, वो अभी तक मतलब अपडेट नहीं किया गया सर, और ऐसा अब असाइनमेंट, युवराज, तुम्हारे असाइनमेंट जो ईमेल पे आ रहे हैं वो ईमेल पे ही रहेंगे, वो एप्लीकेशन पे नहीं जाएंगे। नहीं सर, वो नहीं कह रहा मैं ये कह रहा कि उसमें सर एप्लीकेशन में एक ही क्वेश्चन आंसर दिखा रहा है, लेकिन मैंने तो सारा क्वेश्चन तो भेज दिया, और सर वो री करने के लिए वो करने के लिए बता रहा है कि दोबारा से आंसर देने के लिए कुछ ऐसा। क्या करने बता रहा है दोबारा? दोबारा से आंसर दे सकते हैं सर, वो ओपन है सर। तो सर उसमें ऐसा है कि जो जो क्वेश्चन का आंसर हो गया है उसको सर परमानेंटली लॉक कर दिया जाए सर। नहीं, लेकिन तुमने अगर बीच बीच में किया होगा ना युवराज, तो वो वापस से करने बोलेगा तुमको। यू शुड डू इट इन वन 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 सिटिंग। सर सर एप्लीकेशन पे तो सर मैं लोड ही नहीं हुआ हमारा फाइल आपके पास, तो ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन। वाले लोड है एप्लीकेशन पे, सब्जेक्टिव वाले भी हैं, दोनों भी हैं। अभी के जो बात के हैं वो मुझे डॉक्यूमेंट में आ रहे हैं सबके। सो जिसने जिसने डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है, प्लीज आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए मुझे। आई यस एम सर, डूइंग ऑल। यस सर, वही मैं कह रहा था कि हमारा तो 100 MB का वो फाइल दिखा रहा था कि 100 MB से कम का लोड नहीं हो सकता है, और मैंने 4 फाइल बनाया तो 100 MB का नहीं हुआ, तो आपको सर मेल ही कर दिया था चारों का चारों फाइल, मैंने खुद से एप्लीकेशन पे एक भी फाइल अपलोड नहीं किया। चलेगा, नो इश्यूज। जो मेल आ रहे हैं, मेल के हम लोग दोनों जगह का देख रहे हैं युवराज। इट्स नॉट कि आप यहाँ के दो वहां दो, दोनों जगह के असाइनमेंट चेक हो रहे हैं। सो डोंट वरी ऑन यस दैट। सर। ओके। तो सर मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा अपडेट कर देते, और सर वो वीजा वाला जो अपना असाइनमेंट था सर, और और आज और आज वाला सर, वो दोनों भी एप्लीकेशन पे डाल देते तो मतलब अच्छा होता है। I'll put today's in on the application. Okay. Okay. Any other question? Any other comment or feedback? Anybody wants to say something?
सर कल एमपी और गोवा का मैंने वीडियो देखा था अपने एप्लीकेशन पे सर, तो थोड़ा हाँ, सा अच्छा एप्लीकेशन लगा। पे सारे लोग वीडियोस डले हुए हैं, आप लोग जी डेस्टिनेशन की वीडियो देख लो, बिकॉज हमको वो वीडियोस आइटनरी बनाने के काम आएंगे, प्लीज। जी सर, एमपी और गोवा का मैंने देखा था तो थोड़ा सर अच्छा लगा, तो मैंने एप्लीकेशन में ही रिक्वेस्ट डाली थी सर कि उसका जो पीपीटी है वो सर मेल मेल करने के लिए। और सर आज आज तक का जितना भी क्लास हुआ है मतलब उसमें सर दो ही नोट्स आए थे सर मेल पे बस। किस पे? मेल मेल पे सर आज तक के क्लास का दो ही नोट मतलब आपको मैंने रिमाइंड कराया था तो आपने भेजे थे नो सर, दो इश्यूज, नो नोट इश्यूज, नो दो इश्यूज। दो नोट्स ही आए थे तो सर वो सबको मतलब सर एक जगह करके और उसको सर मेल कर देते तो हम लोग को सर पढ़ने में मतलब अच्छा होता। हमारे पास जी युवराज आ गए हैं, अब हम आपको वापस नहीं भेजेंगे। युवराज हमारे पास आ गए हैं, अब डोंट डोंट जो जो असाइनमेंट तुमको बोले जा रहे हैं जस्ट सबमिट इट, आइदर जी इट्स ऑन एप्लीकेशन और ईमेल, जहां से भी है। आई एम नॉट गोइंग टू सेंड टू एनीबडी एल्स, तुमको मैं वापस नहीं भेजूंगा। आपके असाइनमेंट हमारे पास आ गए, हम लोग उसको एप्लीकेशन पे भी नहीं डालेंगे, इट वुड बी इन जी रिकॉर्ड। ओके, जी जी जो सर। जो असाइनमेंट बोले जा रहे हैं जहां पे भी, वहां के आप कंप्लीट करो, दैट्स इट। ओके, जी सर। anyone else wants to add anything or ask anything, guys? Otherwise we can wrap up the session. कोई क्वेश्चन है? तुषिता, दीक्षा, साहेली, प्रीतम, No, sir. रोहिणी, No, sir. सौम्य देव, सब समझ में आया? आज का दोनों सेशंस इजी था। आप लोग को मैं ये रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, आप लोग रिकॉर्डिंग पे भी देखना, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट गाइस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। 1 घंटे की क्लास में कुछ समझ में आता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सबको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। सो प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस इट एंड ट्राई टू ऐड दीज थिंग्स इन सीवी। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू विद दिस कंटेंट। आपको अच्छे से प्रेजेंट करते आना चाहिए ये चीजें। Okay, so no question, I can close the session. We will meet again on Tuesday. Tuesday को हमारे नया सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। I'll send you the details on email and also हम लोग एप्लीकेशन पे अप करेंगे उसको, ठीक है? Till the time, bye bye, take care, have a good weekend. We speak to you soon. Thank you, bye. I'm Sir. closing the session, guys. Thank you very much. Thank you, sir.